Hello, Assalamualaikum everybody. Hi, thank you so much, Mubarak, for the introduction and for giving me this opportunity. I'm really glad that we can do this today. And without any delay, I'd like to start right ahead. Acha, one thing more before we start this session, can everybody, turn on their videos for a while so that we can have a formal introduction? Just for a while, little bit. And then we can turn it off. I can see there are a lot of people on this session. So can we please turn on our videos for a while? Still waiting. अच्छा चलो कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा तो कम से कम ऑडियो ऑन करके ही बता दो सब हो यहाँ पे और am I talking to robots? So we've got Zeenat here, we've got Aisha Qasim. Hello Aisha. Hello. How are you doing? I'm good. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So glad to have you here. Hi Sahar. So good to see you. Hello. You look really pretty in that green scarf. We're matching. Thanks. So who else do we have here? Hoor. Hi Hoor. Can you see me? Wave at me. Yay, that's the spirit. अच्छा और कौन है हमारे साथ? We've got Saad Ali. Saad, can you turn on your camera or just open your mic and say hi? Hello, people. Acha, chalo, you guys take your time because we have to start with this. Acha, I was hoping this was going to. Hi, so good to have you here, Saad. Thank you. How are you doing today? I'm good. Alhamdulillah. Oh, that's great. Chalo. Acha, we are formally starting our session. So, what are panic attacks? कोई बताना चाहेगा panic attacks क्या होते हैं? Would anybody like to, give their 2 cents into it? For me, it's just a lot of physical symptoms and the sense of impending doom and that I'm losing just losing control on everything and just I'm gonna either pass out, black out, or just gonna die. Yeah, you put it out so realistically. I mean, that's amazing. And I'm so very thank you for sharing that out with us. Do you know where actually the word panic comes from? Anybody? Okay, I'm just gonna assume for a while that nobody knows it. Anyway, so while I was doing my research, I got to know that there's a certain god named Pan who used to scare people away according to Greek mythology. And he would scare people away in such a manner that, he would scream out so badly and so loudly that people would, run away from that place and they would experience that dread and racing heartbeat, and they would flee away from the situation or the place they were at. And in the end क्या होता था कि वो उसकी इस हरकत की वजह से लोगों को जो कैफियत महसूस होती थी उसको they used to call panic, and it's said that the word panic comes from there.
ठीक है, that's just a little historical tidbit for you guys. Okay, moving ahead, like our dear friend, I think it was who shared with, nahin, who, it was who shared it with us, ke panic attack is basically an intense rush. It could be mental or physical that you feel achanak se, right? It comes on very quickly for no apparent reason. But there could sometimes be triggers that are known to you, and sometimes it's just, it just pops up from somewhere. And it can be very stressful and frightening at the same time because you don't know कि कब आपको panic attack आ सकता है. It's like कुछ भी देखा और एकदम से heavy breathing start हो गई. You're feeling like you're gonna suffocate on something. You're feeling as if you would um die or something. It's like that. And it's as if you feel that you're no more in control of your body. Can somebody tell me if they've felt the same way? Would anybody like to volunteer or share their experience with panic attacks? Hoor, I think you're trying to say something, but your mic is on mute, so you can, unmute your mic. Yeah, I think I can totally relate to all of this. Yeah. Because I also read that you vividly remember your first panic attack as it was the worst feeling ever. And I vividly remember mine as well. But yeah. I've been in therapy for a long time and I've been diagnosed with a panic disorder as well. But I still don't know if I'm having a panic attack or not. If it's just another thing that's happening and it's not a panic attack. Because panic attack is supposed to be a big thing. And I feel like, I'm not feeling that. It's just another feeling that's going to go away and all of that kind of stuff. But it takes a toll on your body. You feel exhausted. And the fear of having a panic attack in public where people will just stare and won't know what to do is just a lot. Exactly. But who what is more important here? Maybe what you're good at right now after taking therapy and stuff, it's probably that your coping has gotten better. It has. Yes. It has. I feel a difference. Exactly. Because when you are unable to identify कि यार ये panic attack ही है, या it's just something run of a mill kind of a thing, and then you are like I'm finally getting there. Yeah. It's probably your journey towards better coping and becoming resilient. Yes, definitely. Okay, chalo. We are going to continue with the symptoms. Acha, for people who are here and who have luckily, oh my god, my screen is stuck for some reason. Okay. Acha, for people who haven't luckily, experienced a panic attack, just to give them a list of things that happen during a panic attack. So you might experience a racing heartbeat. ऐसा महसूस होना कि दिल आपका चेस्ट से निकलकर बाहर आ जाएगा. एक होती है palpitation. Palpitation is different, but palpitation की इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाना है that you're feeling कि शायद या तो आपका दिल जो है वो बाहर आ गया है. Sometimes you can even feel it in your ear that your heart is beating. कभी-कभी आपकी पल्स इतनी तेज हो जाती है that you can feel it here. और किसी भी बॉडी के हिस्से में आप फील कर सकते हो उसको. अच्छा, फीलिंग फेंट मतलब डिजी फील कर रहे हो, स्वेटिंग शुरू हो गई, एसी में बैठे हुए हो लेकिन पसीना आ रहा है. Chest pain. Some people do have chest pain because of the contraction of the heart, or perhaps because psychologically they have this feeling inside कि यार कुछ heart attack की feeling आ रही है, चाहे वो आ रही हो या ना आ रही हो. अच्छा, shortness of breath, trembling is like the most prominent feature because आपको कभी कभी खुद भी realization नहीं होती कि ऐसा कुछ हो रहा है, but आपको और आपको पकड़ता है and then they tell you कि हाँ आपका जिस्म कांप रहा है. So sometimes it's that bad that it is out of your conscious awareness. Hot flashes आते हैं, एकदम से पसीना, लाल हो जाना, गाल आपके इतने लाल हो जाएंगे and you'd be like कि ऐसे धुआं निकल रहा है, हाथ लगाओगे तो ऐसे बिल्कुल गर्माइश महसूस होगी. कभी कभी ऐसा लगता है जिस्म ठंडा हो गया, गर्मी है लेकिन जिस्म ठंडा हो गया, या ठंडे पसीने आना जिसे हम कहते हैं. अच्छा, शेकी लिम्स हो रही हैं. I'm just gonna move it here. Okay, choking sensation होती है like we talked about before.
डिजीनेस फील होती है, नमनेस होती है इतनी ज्यादा कि आपको, जैसे कभी हम बैठ जाते हैं नीचे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी टांगे सुन हो रही हैं या पैर सुन हो रहे हैं, उस किस्म की फीलिंग आना। अच्छा, these could differ from people to people, like from one individual to another individual. हर कोई डिफरेंट तरीके से इसे एक्सपीरियंस कर सकता है। कभी हमें ऐसा भी महसूस होगा कि यार मेरे सिम्टम्स जो है, जैसे मैं एक पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, शायद दूसरा बंदा ना कर पाए। बट व्हेन यू सैचुरेट इट डाउन टू द बेसिक क्राइटेरिया, मेन फीलिंग जो होती है वो ऐसे होता है कि दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही, प्रॉब्ली ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। और उसके बाद ऐसा भी होता है, कभी कभी ड्राई माउथ भी फील होता है, मुंह में सलाइवा की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है, यू आर ड्रिंकिंग वाटर रिपीटेडली बट उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप पे। उसके अलावा रिंगिंग इन योर ईयर्स। अच्छा, रिंगिंग इन योर ईयर्स का मतलब है कि एक करके आवाज आ रही होती है, लाइक इट्स नॉट देयर। जब टीवी की लाइट या केबल की लाइट चली जाती है तो वो एक आवाज आती है ना टीवी के अंदर भी, उस किस्म की आवाज आपके कान में आ रही होती है। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं, इट्स लाइक लिटरली कि आपका दम घुट रहा है। सबसे पहली चीज क्या होती है, आपकी सांस रुक रही होती है, यू कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। शेलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, शेलो ब्रीदिंग से पहली चीज आपके जहन में क्या आती है कि शायद I cannot continue living, I cannot continue functioning, and breathing is like the fundamental function of your body. तो अगर आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दम घुट रहा है, somebody is trying to choke me। और फिर उससे क्या पहली चीज जहन में आती है, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है। टिंगलिंग इन योर फिंगर्स, अगेन आपकी जो सेंसेशन है, जो बॉडी के अंदर सेंसेशन है, वो बहुत चेंज हो जाती है। सो ऐसी सुरसराहट सी महसूस होती है, फीलिंग लाइक यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर बॉडी। इट्स लाइक अगर किसी ने अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन देखी है, स्पाइडरमैन होम कमिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देयर इज दिस टाइम व्हेन स्पाइडरमैन डिस्कनेक्ट्स विद हिज बॉडी, जब क्या नाम है उनका, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, आई डोंट रिमेम्बर हिज करेक्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज। या ऑन पॉइंट, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसको वो पकड़ता है या झंझोड़ता है, ही एक्सपीरियंसेस लाइक हिज बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम हिज सोल। दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि यू आर सीइंग योरसेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप खुद देखें कि आपके फंडामेंटल बॉडी फंक्शंस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड देन यू आर फीलिंग कि यार मतलब मैं अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देख रहा हूँ। सो दैट अगेन इज अ सिम्पटम ऑफ पैनिक अटैक। Acha. I have a question. Can we leave questions for the last 15 minutes, because like Okay. please write it down. I would really like to address it. Sure. अच्छा, पैनिक अटैक्स कैसे हैं? दो किस्म के होते हैं, एक क्यूड होते हैं और एक अनक्यूड होते हैं। क्यूड वो होते हैं जिनका हमें पता होता है कि देयर इज अ सर्टेन थिंग व्हिच कुड ट्रिगर इट, और अनक्यूड वो होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता, कभी भी हो सकते हैं। अगर क्यूट पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्यूट से मतलब है कि आपको आपका ट्रिगर पता है, किसी ट्रिगर की वजह से आ रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक फोबिया हो सकता है, लेकिन ये तब होगा अगर पैनिक अटैक उसी चीज से रिलेटेड बार बार आ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारे यहाँ डायग्नोसिस फॉरन यूं थोप के दे दिया जाता है, ये लें आपको ये मसला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मसला तब होगा जब आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे। Sometimes you are experiencing symptoms. You're not exactly experiencing or going through a full-fledged mental disorder, I would say. So maybe you are experiencing what may be a panic attack, but it cannot turn into a panic disorder unless it's recurrent. Recurrent se matlab hai it's happening over and over again. So if you know a trigger, it could be anything. कुछ लोगों को मतलब they have a traumatic past or traumatic history with pet animals, कि कभी किसी को for instance बचपन में किसी डॉगी ने काट लिया था, so they are not going to relate to it in a very positive light, So for psychology students who are here, there was this experiment, if you guys remember, जो कि बच्चा जो था वो traumatized हो गया था एक white rabbit से. Does anybody remember that? कि every time the little Albert experiment, right? And the kid used to be Exactly. scared of every white thing. Exactly. So that association. अब उसका ट्रिगर वो हो गया, वो वाइट चीज से डरने लग गया था.
It turned into a specific white thing phobia. It could be anything. अब वहां तो हमें ट्रिगर पता था, so it was a cute panic attack. वो जब भी वो चीज देखता था उसको डर लगता था. अनक्यूड और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? अनक्यूड और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स वो होते हैं जब हमें माहौल में चीजों का अंदाजा नहीं होता कि क्या चीज है, लेकिन हमारी जिस्म के अंदर ऐसी, क्या कहना चाहिए, मतलब हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं इंटरनल क्यूज जो फिजियोलॉजिकल नेचर के होते हैं कि हमें लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन. कभी कभी लॉट ऑफ अस से कि यार मेरा दिल बैठ रहा है, कुछ बुरा होने वाला है. दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग, बट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. सो इट्स अनक्यूड. दे डोंट नो, बट उनके फिजिकल ट्रिगर्स हैं कुछ जिनको उनको नहीं पता. ये चीज मजीद क्लियर होगी एज वी मूव फॉरवर्ड. अच्छा, let's go into the biological side of panic attacks, because a lot of it is very biological, because the way we experience it, a lot of us think कि biological changes body में क्या होते हैं. अच्छा, panic attack का mechanism समझने से पहले just remember this word I would say. कभी भी हमारे माहौल में कोई इवेंट हुआ है, कोई ट्रिगर आया है, कुछ भी हुआ है, एक्सटर्नल स्टिम्युलस है, ठीक है. स्टिम्युलस को ऑब्जर्व किया बॉडी ने, and then it gave the aha response. A for amygdala, H for hypothalamus, and A for adrenal gland. These are the three major contributors to a panic attack. Amygdala जो होता है वो आपका इमोशन सेंटर होता है, सही है. इमोशन सेंटर से आपको सिग्नल मिलता है कि कुछ गलत होने वाला है. हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक योर ब्रीदिंग, लाइक योर हार्ट बीट एंड स्टफ लाइक दैट. हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है एमिगडाला से कि भाई कुछ गड़बड़ है. वहां से हाइपोथैलेमस क्या करता है कि उस गड़बड़ी को आगे पास करता है एड्रीनल ग्लैंड पर. एड्रीनल ग्लैंड इज नोन फॉर स्ट्रेस हार्मोन. आपकी किडनीज के ऊपर छोटी छोटी ऐसे बीन टाइप जो है एक स्ट्रक्चर होता है जहां से प्रोड्यूस होता है एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, बोथ आर स्ट्रेस हार्मोन्स. ये उस टाइम पर रिलीज होते हैं जब हम स्ट्रेस में जा रहे होते हैं. वंस दीज आर प्रोड्यूस, सर्वाइवल रिस्पॉन्स फौरन आपकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है. सो यू आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी. इट्स कंट्रोलिंग इटसेल्फ, इट्स मेकिंग थिंग्स वर्क बाय इटसेल्फ. अब इसको ऐसे समझ लें कि अलार्म सिस्टम होता है, राइट. अलार्म सिस्टम फायर अलार्म सिस्टम है. जैसे ही धुआं फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्ट करता है फौरन घंटी बजती है. इट्स ऑन ऑटो पायलट. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती है. अगर आपके शावर्स लगे हुए हैं किसी एरिया के अंदर, ऑटोमेटिकली शावर प्रोड्यूस, मतलब बारिश प्रोड्यूस होगी ताकि जहां भी आग लगी वो बुझ जाए. सेम इज द केस विद योर बॉडी. बाहर से कोई ऐसा स्टिम्युलस मिला जिसको उसको पता नहीं था कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, या ऐसे रिस्पॉन्स करना है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है. हमारा इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होता है किसी भी खतरे के खिलाफ? यही ना कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. बिकॉज वी एज एवोल्यूशनरी बीइंग्स, दैट्स हाउ वी इवॉल्व्ड, कि हमें हर चीज जो भी हमें खतरे, मतलब खतरे की अलामत लगती है, हम फौरन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो दैट्स द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. Remember the aha response. Biologically speaking, some people, it is said that some people have a genetic disposition that is designed in such a way कि some people जिनकी family के अंदर panic attacks की history रही है, they are more susceptible to getting a panic attack or experiencing one. Simple सी बात है. बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं, like for instance hypertension, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है. लेकिन हाइपरटेंशन आपको जेनेटिकली तो मिल रही है, बट अगेन, क्या आपकी अम्मी अबू की एनवायरनमेंट और आपकी एनवायरनमेंट दोनों ऐसी थी कि आप हाइपरटेंसिव होते, कि आपकी दोनों की लाइफ में स्ट्रेसर्स थे? बिकॉज अगेन इट्स नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर इज बायोलॉजिकल, नर्चर इज एनवायरमेंटल. आपकी नेचुरल डिस्पोजिशन तो थी, आपको जेनेटिकली आपको मटेरियल मिला हुआ था, आपके जेनेटिक्स में था कि आपको पैनिक अटैक आएगा, आ सकता है. लेकिन अगर आपको उसके ऊपर सोने पे सुहागा एनवायरनमेंट भी ऐसी मिली, तो वो फुल फ्लेज्ड पैनिक अटैक आता है.
नहीं भी आ सकता, कुछ लोगों को नहीं आता बिकॉज उनकी ओवर टाइम कोपिंग अच्छी बन गई है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर डिस्पोजिशनल फैक्टर्स अलोंग विद जेनेटिक फैक्टर्स दोनों रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स स्टिल अंडर स्टडी हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर हर किसी में वही एक स्पेसिफिक जीन नहीं है, जो कि अभी बहुत रीसेंट स्टडी हुई है। उसने कहा कि हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पैनिक अटैक। Whereas in past, people used to say, there is one gene that's responsible for it. But again, that's something we leave to the researchers and they can deal with it. But just for your knowledge, genetics और dispositional correlates both play a role. Dispositional मतलब कि आपकी अपनी personality के अंदर कुछ ऐसे उनसर हैं जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ सकता है, आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, आप एंग्जाइटी है आपको, आप हर चीज की टेंशन बहुत लेते हो। फॉर इंस्टेंस कल आपका एग्जाम है, उसकी टेंशन लेना बनता है, लेकिन कल आपने किसी पार्टी में जाना है जो कि एक बहुत नॉर्मल सी पार्टी है, इसमें कोई आपने परफॉर्मेंस नहीं देनी, बट यू आर स्टिल फीलिंग एंशियस, सो दैट्स अ पर्सनल ट्रेट। सबको समझ आ रहा है? कोई माइक खोल के बताना चाहेगा अब तक कैसा चल रहा है तो प्लीज। I think what you're saying, oh my god, that was a surprise. वापस जाओ। Yeah, learning a lot. Honestly, I am a psych student and a lot of the things are new for me and it's a new learning experience. Thank you for giving us this opportunity. चलो, great. अच्छा, so we have a few new people on board. Welcome guys. Really happy to see you here. We are on the psychological part of this presentation, so I'm just going to minimize this thingy over here, drag it down. Okay, like I was talking about initially, external and internal cues. अब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर आ गए हैं कि क्या वजह होती है पैनिक अटैक आने की। एक्सटर्नल क्यूज से मेरी मुराद ये है कि आपकी बॉडी से आउटसाइड, लाइक बॉडी के बाहर वाले सारे एक्सपीरियंसेस, सो एनवायरमेंटल क्यूज, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, पेरेंटल हिस्ट्री क्या रही है आपकी। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन मोल्डिंग योर चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड का बहुत बड़ा रोल होता है इन मोल्डिंग हु यू आर एज अ पर्सन। आई एम नॉट एक्सक्लूसिवली सेइंग कि आप जो बचपन में हो वही आप बड़े होकर होगे, because a lot of people will come at me for that, but it plays a major role. ठीक है? Parental role during childhood. What is parental role? आया आपके माँ बाप ने आपको इजाजत दी है कि आप खुल के लाइफ एक्सपीरियंस कर सको, या आपके माँ बाप ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है? बाय प्रोटेक्ट आई मीन ओवर प्रोटेक्ट करके रखा है, एंड बाय दैट आई मीन कि आप कहीं ऐसे तो नहीं हो गए। Does anybody remember this? You guys can open your mics and say if you do or if you don't, because I can tell you what it is. Yeah, I do. I think it was a case from Islamabad where there was a fight between some guys with police constables or something like that. Yeah, exactly. That's what happened. So basically, giving you the context behind this meme, कि बच्चा could not handle the situation by himself. बाबा जल्दी आए, क्यों आए भाई? You're a grown ass man, do it yourself. मतलब इट्स लाइक कि आपने बच्चे को मौका ही नहीं दिया कि वो बड़ा हो सके, वो एक एज के अंदर जाके अपने डिसीजन खुद ले सके. So you've overprotected him. Now he does not have the coping mechanism to deal with anything. So every time something happens to him, he's going to be like, "Haan, Dad, I'm having this issue. Please come and do it for me. Like, help me out of this." Because बचपन में बच्चा गिरता था तो आप कहते ओए मेरा बच्चा गिर गया, छोना काका कुछ हुआ तो नहीं. नो, करो छोना काका करो, बट इतना करो कि बच्चे को इतनी आप एक्सपीरियंस करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की विंडो दें. नहीं दिया क्या होगा, कुछ भी थोड़ा सा मसला होगा एंड पीपल बी लाइक आई कैन डू इट. दे लिटरली फेंट इन द फेस ऑफ अ प्रॉब्लम. सो दैट्स एन एक्सटर्नल क्यू. ट्रॉमेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ट्रॉमेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. बचपन में कभी खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सर फट जाता है. बचपन में कोई ऐसी रॉबरी एक्सपीरियंस की है, कोई मगिंग एक्सपीरियंस की है,
कोई भी ऐसा इमोशनली ओवरवेलमिंग इवेंट गुजरा है, उसकी वजह से आप पैनिक अटैक एक्सपीरियंस कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली लेजिट। लेकिन क्या है, अगेन इट्स अ लर्न रिस्पॉन्स। उस टाइम पर क्या वो ट्रॉमा इस तरीके से डील किया गया था कि बच्चे के अंदर या किसी इंसान के अंदर, आई एम सॉरी आई एम सेइंग बच्चा बच्चा बार बार, बट किसी शख्स के अंदर वो कोपिंग एबिलिटीज जो हैं बन चुकी हैं या नहीं बन चुकी। अगर बन गई हैं तो चांसेस ऑफ पैनिक अटैक्स खुद ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं बनी, उसने उसको प्रोसेस नहीं किया, तो कभी भी उससे रिलेटेड छोटी सी चीज भी अगर उसके सामने आएगी तो उसका रिस्पॉन्स वैसा ही होगा जैसा उस टाइम पर था। अगर वो डर गया था, सहम गया था उस वक्त, तो इस टाइम पर भी वैसा ही होगा। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। अगर कोई इंसान किसी कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, ठीक है, now every time that person sits in a car and they are going through a very narrow street, हो सकता है उस टाइम पर वो वही सारी चीजें एक्सपीरियंस करे जो कि उसने लास्ट टाइम उस एक्सीडेंट के दौरान जो है एक्सपीरियंस की थी, बिकॉज इट्स अ लर्न रिस्पॉन्स। उस टाइम क्या हुआ था, आप समझिए आपकी बॉडी ने एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट किया है। उसको ऐसे लगा कि शायद वही चीज दोबारा होने वाली है, बिकॉज हमारे ब्रेन की एक थोड़ी सी शरारत समझने से वो ये है कि वो शॉर्टकट ढूंढता है। अगर आप लोगों में से काफी सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने पढ़ा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ असिमिलेशन। असिमिलेशन इज द आइडिया दैट इफ यू थिंक कि अगर कहीं ABC लिखा हुआ है, A शुरू में है, C आखिर में है, तो A और C अगर अब मैं नीचे ABC की जगह, चलो D भी लगा देती हूँ, लेकिन A और C की जगह वही रखूंगी, तो आपका ब्रेन A और C को ही नोटिस करेगा। अक्सर दफा पढ़ते हुए आप नोटिस करते हो, देयर लिखा हुआ होगा, कुछ और पढ़ लोगे, द पढ़ लोगे, फिर गौर करोगे नहीं देयर लिखा हुआ है। यू आर मिसिंग आउट ऑन द आर because again shortcuts. Now cutting it short, physiological response or emotional response to traumatic or adverse event. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इमोशनल रिस्पॉन्स दोनों इंटरनल क्यूज हैं। कभी कभी एक्सरसाइज के बाद जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, अगर वो विगरस एक्सरसाइज कर लिए तो उनको ऐसा लगता है कि उनको दोबारा पैनिक अटैक ट्रिगर होने लगा है, बिकॉज द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एक्सरसाइज, हार्ट बीट तेज है, बॉडी जो है वो एक स्टेट ऑफ अराउजल के अंदर है। क्या ये वही चीज है जो कि हमने पैनिक अटैक में एक्सपीरियंस की? Somehow, yes, it is. Okay, so who is saying that she cannot hear me? Is everybody able to hear me or not? Okay, okay. People can hear me. Who? It's just you. Anyway, coming back. So कभी कभी इंटरनल क्यूज ऐसे होते हैं, बॉडी के क्यूज ऐसे हैं, सांस एकदम से बढ़ने लग गई है, आपको फिर डर लग रहा है कि शिट फिर से वही चीज होने वाली है मेरे साथ, एंड आई डोंट वांट दैट। सो आई होप यू गाइस गेट द आइडिया। अब हम आ जाते हैं लर्न रिस्पॉन्स। इट्स अ लर्न रिस्पॉन्स। क्यों? पहले की मेमोरी है, मेमोरी से ही आपके ब्रेन ने वो चीज एक्सट्रैक्ट की, एक्सट्रैक्ट करके आपके एकदम से फेस के सामने ले आया। क्या होगा? सिचुएशन सिमिलर टू एडवर्स इवेंट, चाहे वो कोई ट्रोमैटिक इवेंट का कोई इंडिकेटर था कि आप गाड़ी से जा रहे हो, नैरो जगह से गुजर रहे हो, वहां पे पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। आपको पुरानी कोई ऐसी फीलिंग है, पैनिक अटैक की कोई मेमोरी है कि बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी सेंसेशन आ रही है, पाँव सुन हो रहे हैं, दम घुट रहा है, दिल बैठ रहा है, फिर आपको क्या लगा कि शायद पैनिक अटैक आने लगा। दोनों क्यूज देखो अलग हैं, एक जगह एक्सटर्नली जो है आपका ट्रिगर आ रहा है, एक इंटरनल ट्रिगर आ रहा है, बट दोनों में क्या है? लर्न रिस्पॉन्स। लर्न रिस्पॉन्स ट्रिगर कब हो रहा है? जब सिमिलर इवेंट को आप देख रहे हो। ओके, like the last line on this slide says, the brain picks up on cues and acts as though the same event was taking place again. Action replay. Okay, चलो, अच्छा, दिस वाज द एग्जाम्पल कि बच्चे को हमने क्या करना है, सपोर्ट देनी है, लेकिन सपोर्ट के बाद उसको लाइफ एक्सपीरियंस भी करने देनी है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
Acha, now the interesting part, and I'm just gonna look at the time. Okay, we are going perfectly according to our set time. Okay, so coping with a panic attack. First of all, distraction techniques. कोई कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर? I would like to interact with you guys a little bit. I think I don't know, like everybody has different experiences, but I don't know if they work for me or not. Because when I'm in a panic attack or I'm in panic mode, my brain just goes override, use every single grounding technique in the book. गिनने भी लग जाओ, उल्टी गिनती गिनने लग जाओ, कलर्स देखने लग जाओ, क्या सुनाई दे रहा है क्या देखने लग जाओ. So it's like I don't know if they work or not, or I'm not using them well. So it's just my personal experience with grounding techniques. Okay. Grounding techniques हमारे लिए काम नहीं करती हैं. That's perfectly fine. हर किसी के लिए हर चीज काम नहीं करती है. ठीक है? So thank you for sharing your experience. Let's see कि इधर कुछ अगर different है तो we can stuff it in. Okay. So distraction techniques. First distraction technique is 3-3-3. Name 3 things that you can see. Anything. I know this is hard when you are, but this is for the time when you are anticipating a panic attack. आपको लग रहा है, simple सी मिसाल है कि अगर if you are in a public place, ठीक है, and okay, I'm not sure if I should give this example, but I'm gonna go ahead because it's easier for people to understand. So you are in a public space, right? या आपकी मीटिंग है थोड़ी देर बाद. Let's just put it this way. आपकी मीटिंग है थोड़ी देर बाद, and you are meeting with an important set of people. I'm pretty sure most of you would avoid anything and everything while you're having lunch that would make you feel bloated, right? By bloated I mean कि आपको अगर किसी चीज से पता है कि you're if you have IBS, or if you're eating green leafy vegetables, you are prone to burping a lot and farting too. Let's be honest about that. तो क्या आप कभी भी ऐसी चीज खाएंगे उससे पहले? नहीं खाएंगे, right? You try to avoid it. Similarly, panic attack को ऐसे समझो कि एक ऐसा aversive event है जो कि होने वाला है, but it can be avoided. Belief होना जरूरी है. If this is something that can be avoided, then what do? We do the 3-3 technique. Hello Sidra, hi, how are you? Okay, she's still joining. अच्छा, चलो join कर लें तब तक. So the 3-3 technique is basically name 3 things that you can see in front of you. Best way, 3 वो चीजें देखो जो कि बहुत different है. कुछ लोग होते हैं उनको जिनके साथ मैंने ये काम किया है, they often go for मेरे सामने एक नोटपैड पड़ा हुआ है, एक फोन पड़ा हुआ है और एक पेन पड़ा हुआ है. Dude, पड़ा हुआ तो है, we all know that, but try to explore the horizon, look far ahead. कहाँ जाओ, सामने देखो और क्या क्या नजर आ रहा है. Try to look for things far and beyond. It would help. 3 things that you can see, 3 things that you can touch. Now you can touch the notepad, hold it, ठीक है. You can touch the phone, hold it, allow yourself to feel it कि कैसा feel हो रहा है. Then 3 things touch करने के बाद 3 things that you can hear. Right now I can hear the sound of a fan. I can hear the sound of nobody speaking, so silence. I can hear the sound of some children talking outside. Look for it, actively look for it. ये नहीं होता कि आपने चीज़ा चीज़ें जो आपके सामने हैं उनको उठा के उनके नाम ले लिए. No, this is not how it works. You have to invest yourself actively. Again, 5, 4, 3, 2, 1 is another distraction technique. Now 5 things that you can see. Okay, 5 things that you can see. 4 things that you can touch. 3 things that you can hear. 2 things that you can smell. Acha, smell is very important. I don't know how people work without smelling stuff, but jitni bhi jo aroma therapy hoti hai, I truly believe in that. Even right now, I have a candle with me.
ठीक है? So always look for things and one thing that you can taste. अच्छा, 5 senses involve हो गए, 5 senses को involve करना था हमने. क्यों करना था? Because आपके सेंसेस के ही थ्रू आप अपने आप को ग्राउंड करते हो. दिस इज हाउ यू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. आंखों से देखते हो, नाक से सूंघते हो, मुंह से खाते हो, बोलते हो, कानों से सुनते हो, हाथ से जो टेक्टाइल फीलिंग है उससे टच करते हो. You know, when a panic attack happens, what do? We disconnect with the body. We disconnect with the world. Body से भी disconnect हो गए, world से भी disconnect हो गए. बीच में है आप कहीं पे. So ना आप यहाँ के हैं, ना आप यहाँ के हैं. So how do you continue? You have to do something, right? You have to come back into the moment, and you do that by putting your senses into use. I know this is easier for me to say because I'm not experiencing a panic attack right now, but for all times to come, but when I do, Khuda na hasta, if any one of you does, this is your coping strategy. Like, this is the holy grail, the 5 senses exercise. एक्टिवली करोगे, इस यकीन के साथ करोगे कि हाँ मुझे फायदा होगा तो होगा. यू नो, साइकोलॉजी इज वेरी मच अबाउट योर बिलीफ. अगर आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तुम्हारा पत्थर पे भी यकीन होगा तो मैं उसको तुम्हारे लिए करामत बना दूंगा. गेट इट? अच्छा, सेफ्टी चैंट. What is a safety chant? Safety chant could be anything that makes you feel safe, anything that you have prior association with, anything that somebody else might have said to you who had you had a very emotional connection with them. So I always tell myself, whenever I'm in an adverse situation, I tell myself I've got this, because ironically this is something that not somebody very close to me said to me, but this works out for me. So you have to find one for yourself. It could be anything. मैं कर लूंगी. You know, I've got this. Maybe it could be a dua that works out for you. A lot of people recite Ayat Karima, for instance, because उनको ऐसा लगता है कि Ayat Karima पढ़ने से उनके काम में आसानी हो जाती है. So no matter what the problem is, they'll recite that. For some people, it's Surah Yasin. For some people, it's Ayatul Kursi. For some people, it's Durood Sharif. It could be anything. It could be, you know, who do we have? अल्ताफ साहब को म्यूट कर दिया है probably. Okay. हेलो अल्ताफ साहब. अच्छा जनाब, सेफ्टी चैंट हो गई. अब एक रिमाइंडर जो कि आपने हमेशा अपने आप को बताना है कि पैनिक अटैक जो है वो क्या है. इट्स बेसिकली योर बॉडी कोपिंग मैकेनिज्म. कोपिंग मैकेनिज्म कैसे है? कोपिंग मैकेनिज्म ऐसे है कि आपकी बॉडी चली जाती है एकदम प्रोटेक्शन मोड के अंदर, सेफ्टी मोड के अंदर. उसको क्योंकि बाहर से कोई खतरा नजर आता है जिसकी वजह से आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है. आपको फ्लाइट और फाइट मोड के अंदर रेडी कर दिया जाता है. सो एवरी टाइम यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ पैनिक अटैक, टेल योरसेल्फ कि ये मेरी बॉडी का रिएक्शन है. यू नो, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बच्चे एक टाइम पर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. एंड आई पर्सनली बिलीव हम साउथ एशियन कंट्रीज में अपने बच्चों को अपनी बॉडी एक्सप्लोर करने ही नहीं देते हैं. हमारे बच्चों को नहीं पता कि अपने आप को कैसे लेकर चलना है, मेरी बॉडी किस किस तरीके से एक्ट कर सकती है इस सिचुएशन में. हाउ डू आई फील? आई एम नॉट वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ माई सेल्फ. मैं कौन सी बातें करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कौन सी बातें करती हूँ तो उससे मेरे चेहरे के तासुरात ऐसे हो जाते हैं. You know, there is a lot to know about ourselves. So at this point, just understand कि हमारी body की biology has a great role to play in the psychological side as well. So psychology and biology go hand in hand. These are not two different fields. आपकी psychological और biological debate जो है, जो ये कहती है कि हर चीज जो है उसको आप dissect कर दो. There is not a dichotomy. There's not a dichotomy. They go hand in hand. अब इस चीज को इसी नजर से देखें कि everything my body is doing right now is designed to keep me safe and protect me. आपकी बॉडी आपकी दुश्मन नहीं है.
आपकी इर्द गिर्द का माहौल ऐसा हो सकता है कि आपको महसूस हो कि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है, बट इट्स नॉट दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सही है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस इट. ठीक है, लेट्स डू अ फ्यू ब्रीथिंग टेक्निक्स. ऐसी सांस हो जाती है व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग अ पैनिक अटैक. ठीक है. इस ब्रीदिंग इट्स द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट, आई थिंक, जो करामद आपके पास एक टेक्निक है अपने आप को किसी भी सिचुएशन में रेगुलेट करने की. दैट्स ब्रीदिंग टेक्निक. टुडे वी आर गोइंग टू डू 3. अगर अपने कैमरास खोलना चाहते हैं तो प्लीज खोल लें. अगर नहीं खोलना चाहते तो दैट्स टोटली अप टू यू, बट आई वुड रियली लाइक फॉर सम ऑफ यू टू एटलीस्ट ओपन इट सो वी कैन डू इट टुगेदर. Anybody? Volunteers? Nobody wants to open their camera? ठीक है, फाइन. चलो कैमरा बंद करके कर लो. बेली ब्रीदिंग में क्या करते हैं, आपने पेट से सांस लेनी है. पेट से सांस कैसे ली जाती है? जब आप इनहेल करोगे तो आपकी बेली को बाहर आना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर आएगी. तो ऐसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो, और फिर आप मुंह से निकालोगे. लेकिन जब एक्सेल करोगे तो हवा बाहर आ रही है, तो पेट को क्या होना चाहिए, कमर के साथ जुड़ जाना चाहिए. सो इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल अगेन एंड एक्सेल. किसी से हो पाया है? माइक खोल के बताना चाहेगा? जी हो पाएगा. ऑसम ऑसम. ठीक है, अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज. दैट इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. लाइक द नेम सजेस्ट, हमने एक नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, होल्ड करना है उसको, और फिर दूसरी से एक्सहेल करना है. सो इनहेल फ्रॉम वन नॉस्ट्रल and exhale. So basically, inhale and exhale. Inhale again and exhale. ठीक है. Alternate nostril breathing. अगर किसी को साइनस का इशू है, उसके लिए और भी ज्यादा मुफीद है. वो सुबह उठ के करेगा, फ्रेश एयर अंदर लेगा, लंग्स खुलेंगे. साइनसेस यहाँ से बंद है, साइनस ग्लैंड बंद है, स्टीम लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे और फायदा होगा. ठीक है. अब हम जा रहे हैं कंपैशनेट ब्रीदिंग की तरफ. कंपैशनेट ब्रीदिंग में क्या होगा? कंपैशनेट ब्रीदिंग में एक हाथ हम यहाँ रखेंगे अपने चेस्ट पर, और एक हाथ हम यहाँ पर फोरहेड पर रखेंगे. ठीक है. अब हाथ ऐसे रखना है कि व्हेन यू आर इनहेलिंग तो आपको अपनी हार्ट बीट अंदर महसूस होनी चाहिए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. Inhale, hold it in and exhale. Inhale again and exhale. बहुत अच्छा रिजल्ट होगा अगर आंखें बंद करके ट्राई करें. सो इनहेल विद योर आईज क्लोज, ट्राई टू फील योर हार्ट अंडरनीथ योर हैंड. होल्ड इट इन एंड एक्सहेल. ठीक है. Compassionate breathing, because this is like a calming and soothing touch to yourself. The moment you keep your hand on your chest and feel your heartbeat underneath it, you're basically grounding yourself as well. Touch. ठीक है. टच से क्या हो रहा है, आपको दोबारा याद आ रहा है कि you are in connection with your body. आपने अपनी बॉडी से डिसोसिएट नहीं किया. You're still there. अल्ताफ साहब, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज माइक ऑन करके कहिए. आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से समथिंग. No, ma'am. I'm not trying to say anything. All right. Actually, you just said hello to me, so I just returned back. Okay. Thank you. You're welcome. अच्छा, this is a breathing exercise. I think अगर आप इसके साथ देख के करेंगे, so you're inhaling. ठीक है.
और जैसे ये अंदर जाएगा, you're going into the exhale mode. सही हो गया? ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, so you can continue with that. Okay, need to pause that and move forward. So we have a couple of more techniques. सिद्रा, कंपैशनेट ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या चीज आपको नहीं समझ आई है? बेसिकली हाथ यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ रखना है और अपनी हार्ट बीट को महसूस करना है. दिस इज टू ग्राउंड योरसेल्फ. देखो, कोई भी चीज जब आपको वाइब्रेट होती हुई महसूस होती है ना, या कोई भी चीज हरारत करती हुई महसूस होती है, सो दैट कनेक्ट्स यू अगेन. क्यों हम अक्सर हक करने के बाद किसी और शख्स को अच्छा फील करते हैं? एक तो वो होल्डिंग, ठीक है. दूसरी चीज, the thing that you can feel between the two of you, the heartbeat, it's calming for us. Oxytocin release hota hai. So right now we're trying to give ourselves a calming touch as well while we are breathing. Can I ask one thing? If we cannot like feel our heartbeat as you had asked, right? So is that fine also? देखिए, इनिशियली तो आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बिकॉज हम लोगों को अपनी बॉडी से भी सेंसिटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है. इट्स फाइन इफ यू कैन नॉट डू इट राइट नाउ. प्रॉब्ली मूव अ हैंड अ लिटिल बिट हियर एंड देयर वेयर यू कैन फील इट and then try to practice it, and then you'll feel it. Thank you. You're welcome. Okay, so we've got a few more techniques, right? So हमेशा ये चीज नहीं कर सकते, but if you're at home and you're in a place where you have access to cold water, just splash yourself with cold water. It's a reminder. उठो, जागो, you're in this moment, don't dissociate. That's that. Because panic attack में हम अपनी बॉडी के अंदर ही इतना खो जाते हैं that we don't understand कि actually हो क्या रहा है, हमारे बाहर क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है. It's just like we're in a numb state and everything is out of our control. So splash yourself with some cold water. Practice PMR. PMR is progressive muscle relaxation. Progressive muscle relaxation. We are short on time, or otherwise we would have done that today, but you can get a lot of videos on PMR. Online जाएं, and it's basically हम एक एक बॉडी के हिस्से को लेकर अपनी बॉडी का पूरा स्कैन करते हैं, and then we try to put stress on it and then release it. Have sour candy. Panic attack के दौरान अगर आप choke कर रहे हो, please don't eat anything or you will choke on it. उस वक्त के लिए नहीं है. लेकिन if you are in a stable condition but you feel कि हाँ कुछ होने वाला है, have a sour candy. कोई भी ले लो, चाहे वो चूरन चटनी है, चाहे वो कोई these are let me remember the name. These are very sour candy आती है, उसके ऊपर एक कार्टून बना हुआ है, उसके बाल ऐसे खड़े हुए होते हैं. You can try those. बहुत सस्ती मिलती हैं. For everybody, it's very affordable. So keep one with that. Acha, have a grounding toolkit. A grounding toolkit is basically anything that could, help you get in touch with your present again. Basically, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी ऐसी एसोसिएशन है जिससे आप काम फील करते हो. So छोटे बच्चे हैं, वो अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं जब भी वो डरते हैं. कुछ बच्चों के पास टेडी बेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के पास पेन होता है, they like doing this with their pen, so they are continuously ticking that. इमोशनल एसोसिएशन नहीं है, लेकिन फिजिकल एसोसिएशन जरूर है. कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि this is something that I can hold on to while giving presentations. बहुत लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, स्टेज फ्राइट होता है. क्या करना चाहिए? इतने सारे लोग हैं ना सामने, देख के कुछ हो रहा है, दिल ऐसे लग रहा है फड़क के बाहर आ जाएगा. क्या करें? कोई भी ऐसी चीज हाथ में पकड़ ले जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन रह चुका है. कोई कीचेन, कोई ब्रेसलेट पहन लो, कोई हाथ में पकड़ने वाला, कोई फिजिट स्पिनर है. अगर फिजिट स्पिनर आप उस वक्त नहीं यूज कर सकते, पेन रख लो हाथ में. एक तो वो भी खत्म हो जाएगी, आपकी फिजिकल एनर्जी भी यूज हो रही है यहाँ पे, प्लस यू आर नॉट डायरेक्टली and presently thinking about that thing that's bothering you. That is like a lot of people out there. Hello. Hello. I wanted to say Yeah. that can we suggest that koi picture of your loved one? Sure. They have. Thank you for bringing this up.
A picture of your loved one could help. How? Those picture lockets, picture जिसका तो छोटी सी तस्वीर लगी हुई होती, even you can use those as well. So it's with you, it's hanging in your neck all the time. Hold it on like this. You can do that. Whatever works for you. Be as creative as you like. Counting backwards. Not like 10, 9, 8, 7, 6, 5. Counting backwards in the sense कि आप 2 digits छोड़ के count कर रहे हो. So आपकी conscious awareness लग रही है, आपका conscious sense लग रहा है उसके अंदर. Anything that takes effort. Visualizing a safe space. What is a safe space for you? A place that makes you feel calm, that makes you feel relaxed. It could be anything. By the sea. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें समंदर के पास बैठना अच्छा लगता है. You know, when we close our eyes, so that's really calming. We're sitting by the seashore, पानी की आवाज आ रही है, छांव में बैठे हुए हैं. Anything that could come. Like you can transport yourself from here to there. Self-soothing exercises. Self-soothing exercises बहुत सारी होती हैं. For now, this is even a self-soothing exercise. You know, holding your arms like this, just like this, or perhaps rubbing them like this. So it's a reassurance from yourself. You know, you're going to be fine. You're going to be okay. बहुत सारी ऐसी exercises आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, and you can, you know, try them out and find out the best जो आपके लिए suitable. Then we have take a walk. देखो physical, अभी I was listening to somebody and they just said कि हरकत में ही बरकत है. So take a walk. By take a walk I mean ऐसी जगह जाओ जहाँ पर तुम्हें लगता है कि जैसे कुछ लोगों को crowded जगह के अंदर panic attack आता है. So you are distancing yourself from that situation. You're moving away. You can go out for a walk. You can go out for a walk even when you're anticipating a panic attack. You're moving yourself. You're changing your environment. हमेशा possible नहीं है. जब possible हो तब कर लो. And the last solution is seek counseling. And by counseling I mean like go for therapy. Like honestly, this is no joke. Go for therapy. We are living in the 21st century, right? चाहे लोग कितना भी इसको ये कहे कि हाँ जिसका जो दिल चाहता है, जो मंजन बेचना चाहता है वो बेचता है, but this works. आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव चाहिए. देखो डॉक्टर्स भी तो चेंज करते हो ना, हर डॉक्टर से आपका इलाज नहीं होता, हर डॉक्टर आपकी बीमारी की जड़ नहीं पकड़ता, कोई तो पकड़ेगा. तो क्यों आप थेरेपी को चैलेंज करते हो एक बंदे के ऊपर डिपेंड करते हुए कि यार दिस डजंट वर्क. You know, that too is a cognitive error because you're thinking in black and white terms कि अगर उसके लिए ये एक बंदा काम नहीं कर रहा तो ये सब जो है ना फजूल लोग हैं. Please take your mental health seriously. ये गेम प्लान है आपके लिए, समरी है कि अगर पैनिक अटैक आता है तो आप किस तरीके से चीजें लेके चल सकते हो. I'm just gonna end this session here क्योंकि just a little something for you guys. कि people raised on love see things differently than people raised on survival. Panic attack is a survival mode, just remember that. So make sure that when you are navigating a situation like that, what are you doing? Panic attack के साथ रहना चाहते हो तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? Panic attack को change करना चाहते हो तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? Somebody, okay, Sahar, you have a question? Sure, these are my contact details in case you guys have any questions that cannot be answered in today's session. You can go ahead and contact me on email or on my number and shoot, open for questions now. Mubarak, do we have time or are we running short on time? How much time do we have? Yes, we have time. All right, can you give me an estimate? Kitna time hai hamare paas? 10 minutes would be good. Okay, so we have got 10 minutes, guys. Shoot away. Can I ask my question? Sure. Go ahead, Sahar.